Number 20. So in a potato race, a bucket is placed at the starting point, as you can see in the figure, which is 5 meters from the first potato. So the bucket is 5 meters from the first potato. Just yeah. So in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. You can see the first potato is here. 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 Here is the first potato and the bucket is 5 meters away from that. There is a first potato and the bucket is 5 meters away from that. And the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. So the next potato 3 meters apart, next potato 3 meters apart, next potato 3 meters apart, next potato 3 meters apart. That's how the distances are maintained. There are 10 potatoes in the line. Total how many potatoes are there? 10 potatoes are there. A competitor is start from the bucket. So a person is starting from the bucket. Okay, this is the bucket. First person starts from here. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato. Will go 5 meters, pick the potato, okay, and runs back with it, drop it in the bucket. So it's a game. Okay, जो भी ये गेम स्टार्ट कर रहा है वो क्या करेगा, बकेट के पास से स्टार्ट करेगा, विल रन, सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो पिक करेगा, विल गेट बैक एंड विल थ्रो द पोटैटो इन द बकेट एंड देन विल क्विकली रन टू पिक द सेकंड पोटैटो. ओके, तो फर्स्ट पोटैटो पिक करने में कितना डिस्टेंस कवर करा पर्सन ने? 5 मीटर पोटैटो पिक करने के लिए और 5 मीटर अगेन गेट बैक टू द सेम प्लेस. Okay, to just throw the potato in the bucket. Yes or no? 5 plus 5 10 मीटर. पर्सन ने पहले पोटेटो को पिक करने से लेकर उसे बकेट में डालने तक कितना डिस्टेंस कवर करा? 10 मीटर. यस और नो? यस. ओके, अब फिर से बकेट के पास से ही पर्सन विल स्टार्ट रनिंग टू पिक द सेकेंड पोटेटो. नाउ थिंक अबाउट इट, सेकेंड पोटेटो पिक करने के लिए पर्सन को कितना लगेगा? 5 मीटर और 3 मोर. ओके, 5 और 3 मोर, क्योंकि अब ये पोटेटो है ही नहीं. 5 एंड 3 मोर, तो जाने में 5 प्लस 3 8 और आने में 8, तो 8 प्लस 8 16 मीटर सेकेंड बारी में कवर करना पड़ रहा है सेकेंड पोटेटो को उठाने से लेकर बकेट में डालने तक. यस और नो? यस. ओके, अब थर्ड पोटैटो की बारी है. दिस पोटैटो गॉन. The third potato 5 plus 3 plus 3, that means 5 6 7 8 9 10 11 जाने में potato pick किया, फिर get back to cover, the person will be covering 11 again to just throw it in the bucket. So 11 plus 11 22, right? यस. ऐसा करते करते एक एक पोटैटो पिक हो रहा है. हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? What is the total distance the competitor has to run? तो हम डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे थे, अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम क्यों अचानक से इस पोटैटो वाले गेम में डिस्टेंस की बात करना हमने शुरू कर दी. आ रहा है समझ में? क्योंकि हमें डिस्टेंस का एपी चाहिए ताकि हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सके. आ रहा है समझ में? यस. ओके, पहले पोटैटो को पिक करने में, फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में टोटल 10 मीटर कवर करा पर्सन ने. सेकेंड पोटैटो को पिक करने में टोटल 16 मीटर कवर करा पर्सन ने. थर्ड पोटैटो को पिक करने में टोटल तो 22 मीटर कवर करना पड़ा पर्सन को.
एंड फोर्थ पोटेटो, फिफ्थ पोटेटो, सिक्स्थ पोटेटो, ऐसे कितने पोटेटो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे 10 पोटेटोज है. ओके, where it is written other potato 3 meter, there are 10 potatoes. Can you see there are 10 potatoes? यस. नाउ अब ये क्वेश्चन है कि ये जो हमने सीक्वेंस बना रखा है डिस्टेंसेस का, क्या ये एपी में है? तभी तो हम एपी वाले फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे. इज इट इन एपी 10, 16, 22? प्लीज चेक इट क्विकली. इज इट इन एपी, अब्दुल्ला? यस. इट्स इन एपी. ओके, तो हमारे पास एक एपी है. ओके, इस एपी के जितने भी टर्म्स है उनका समेशन निकालना है. हमें पता है इस एपी में 10 टर्म्स ही होंगे, क्योंकि पर्सन को कितने कितने पटेटोज पिक करने हैं, 10 पटेटोज. तो इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स का समेशन निकालना है. आ रहा है समझ में? यस. दैट इज n by 2, 2a plus n minus 1, 10 minus 1 into d. कॉमन डिफरेंस इज 6. इज इट क्लियर? ऐसा करते ही हमें पहली बारी में 10 मीटर कवर किया, दूसरी बारी में 16 मीटर. टोटल डिस्टेंस इन सारे पोटेटोज को पिक करने में टोटल कितना चलना पड़ा, टोटल कितने स्टेप्स हुए, टोटल कितने डिस्टेंस हुए, ये समझ में आ जाएगा, हाँ या ना? यस. इज इट क्लियर? यस. ओके, आई एम गोइंग टू डू जस्ट टेक द previous one, 19. 200 logs are stacked in the following manner. Logs means you can see the wooden just piece of block. So 200 logs are stacked in the following manner. You can see how it is stacked. 20 log in the bottom row. So bottom वाले रो में कितने logs है? 20. Logs का मतलब ये जो एक एक wooden ये जो piece है इसे logs बुला रहे हैं. Okay, that's called as log. So कितने बॉटम वाले रो में कितने लॉग है? 20. ओके, 19 इज इन द नेक्स्ट रो. सो उसके जस्ट नेक्स्ट रो में कितने हैं? 19 है. बॉटम में 20 लॉक्स है, उसके ऊपर 19 लॉक्स. जस्ट अबव दैट 18 लॉक्स. सी, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट. उसके ऊपर 17 लॉक्स. ओके ओके, जस्ट लाइक दिस. 16 लॉक्स, जस्ट लाइक दिस. 15 लॉक्स. ओके, in how many rows are the 200 logs placed? In how many rows? Okay, how many rows are required? So this is the first row, number of logs in the first row. This is the number of logs in the second row. This is the number of logs in the third row. ओके हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 17 है, और ऐसा करते करते हम 1 तक आ जाएंगे. बिल्कुल नहीं. टोटल कितने लॉग्स है? 200 लॉग्स ही हैं. टोटल कितनी पीसेस हैं? 200. तो अगर हमने पहले वाले में 20 अरेंज कर दिया, दूसरे वाले में 19 अरेंज कर दिया, तीसरे वाले में 18 अरेंज कर रखा है, उसके ऊपर 17 अरेंज कर रखा है, ऐसा करते करते हम कौन से नंबर तक पहुंचेंगे? 15, 16, 14, 13, 9th, 10th और 1. मेकिंग सेंस? ताकि हमारा 200 पीसेस यूज हो जाए. आ रहा है समझ में? यस मैम. ओके, तो हम फिर से एपी कंसेप्ट यूज करेंगे. फिर पहला टर्म इस एपी का 20 है, दूसरा टर्म 19 है, तीसरा टर्म 18 है. ओके, चौथा टर्म 17 है. ऐसे कितने टर्म्स हम ले कि उन सभी को ऐड करके हमें 200 मिल जाए. आ रहा है समझ में? यस. तो हमें यहाँ क्या क्या निकालना है? एन. कितने टर्म्स का समेशन 200 है? ओके, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, 8 टर्म. कितने टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमें 200 मिलेगा? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी रोज आर 200
लॉग्स प्लेस्ड, तो फर्स्ट रो में 20 है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, फोर्थ रो में 17 है. कितने रोज चाहिए, मतलब कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि हमें 200 मिल जाए, राइट? यस ओके, सो फिर से हम एपी का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, सम दैट इज n by 2. इस बार हमें n पता भी नहीं है. ओके, वी नो द समेशन दैट इज 200. 2a, 2a, that is 2 into 20 plus n minus 1, n minus 1 into d. The common difference is 1 over here. That too minus 1, because a2 minus a1, that is negative 1. Getting it, Abdullah? यस मैम Okay, let's do the calculation to take out the value of n. This equation is clear to you. Will you be able to solve it for finding the value of n from here? मैंने सिर्फ एपी का यस फॉर्मूला यूज करा है, दैट एस एन इज 200. सो 200 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मैंने ए की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे एंड डी की वैल्यू. विल यू बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम हियर? एन, प्लीज ट्राई. ध्यान रखना हमारा डी नेगेटिव 1 है, नॉट पॉजिटिव 1. इट्स 25 एन इज 25. लेट मी चेक. आर यू गेटिंग क्वाड्रेटिक? Have you got the same equation, Abdullah? यस Which two factors you have taken? 441 मैम. Just a moment, no? Just a second. Am I doing any mistake? 200 is equals to n by 2. Just a moment. Let me write it over here. 200 is equals to n by 2. 2a, that is 2 into 20, plus
n minus 1 into common difference is -1. So 400 is equals to n 40 plus minus n plus 1. Oh yeah, 41. Okay, sorry, I have written 51 over there. That's why the confusion. Okay, so it is 41 minus n. Yeah, so it will be 41 and minus n square. We'll be getting n square minus 41 and minus plus 400 is equals to 0. Okay, now if I'll take the quadratic formula, minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. So one is 41 plus 9 by 2. Another is 41 minus 9 by 2. So 41 plus 9, 50 by 2. That is 25. Have you said 25? Have Yes. you said 25? Yes, ma'am. Okay, 1 from here and 8 from there. That means, are you getting two answers like this? Yes. Now, which one is the correct option, right? Yes. If I would have got one of the answer in decimal, then of course I would have just rejected that particular answer. But here both the answer are coming as a that n can be 25 and n can be 16, right? But we have to give one answer, that how many? How many rows? So 25. We are starting from 20. Okay. And first row 20. 20 से 1 तक आने में, ओके 20 से 1 तक आने में टोटल हमारे पास, अगर हम 1 से लेके 20 तक टोटल कितने नंबर्स हैं काउंट करें तो 20 नंबर्स होंगे हमारे, राइट? Yes. राइट, ओके। या फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में भी काउंट करें कि पहला 20, दूसरा 19, ओके, देन 18, देन 17, देन 16। तो ऐसे भी हमें 1 तक आने में टोटल 20 टर्म्स ही होंगे, राइट? Yes. तो ये जो पहला वाला आंसर 25 आंसर आ रहा है, ये क्या इलॉजिकल नहीं हमें समझ में आ रहा है कि n हमारा 25 कैसे हो गया? हमने स्टार्ट करा था 20 से, पहले रो में 20 है, दूसरे रो में 19 है, तीसरे रो में 18 है, चौथे रो में 17 है, उसके बाद 16, उसके बाद 15 है। तो ऐसा करते करते अगर हम 1 तक भी आ जाए तो टोटल 20 टर्म्स ही होंगे, हाँ या ना? Yes. तो 25 टर्म तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव नंबर्स आने लगते हैं ना। Yes. ओके, ऐसा हमें लग रहा है 16। लेट्स चेक द रिवर्स वे। ओके, आई एम शोइंग यू व्हाई if 16 works or not. So sum of 16 terms of this AP, ऐसा हमें लग रहा है कि sum of 16 term ही हमें डिक्लेयर करना चाहिए। चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। n by 2, 2a plus n minus 1, 16 minus 1 into d, that is minus 1. Okay, so 40 minus 15, and here 8. 8 into 25. Can we see we are getting 200? Can we see? Yes. अगर हमने 16 टर्म के समेशन को चेक करा, जस्ट टू रीचेक, हमें 200 मिल रहा है। 25 टर्म का समेशन 200 नहीं होगा, चलो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं।
25 by 2. Okay, 2a, that is 2 into 20, plus 25 minus 1, 24 into minus 1, right? Yes. 25 by 2, that means 40 minus 24, 6. And here we'll be having, actually we must not check it, okay, क्योंकि हम number of rows की बात कर रहे हैं, तो 16 logically is the correct answer. Is it making sense, Abdullah? Yes, ma'am. Okay, we will be picking option as a 16. Okay, so yeah, checking and all these two is not required. Logically 16 terms added together is giving all the 200 logs, okay, already used. That is making more sense than 25. Okay, let's do question number 18. I need to minimize the screen to show you the picture. Can you see the picture of 18? I'm Yes. reading the statement for you. If it's not readable, don't worry, I'm reading it for you. So here it says that a spiral is made up of successive semicircles. A spiral is made up of successive semicircles. Okay, with center alternately at A and B. This is spiral which you can see on the screen. It's called a spiral. Okay, in real life also you must have seen such spirals. So a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B. तो सबसे पहले क्या हमें एक सेमी सर्कल दिख रहा है, द ब्राउन वन. Yes. ओके, उसके बाद हमें दूसरा सेमी सर्कल क्या दिख रहा है, द ग्रीन वन. ओके, उसके बाद क्या हमें थर्ड सेमी सर्कल दिख रहा है, Yes. दिस पर्पल वन. ओके, उसके बाद और हमारे पास ऐसे ही हमारा सेमी सर्कल्स कंटिन्यू होते जा रहा है. ओके, सो अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल. हाँ, हमें दिख रहा है सक्सेसिव सेमी सर्कल. ओके, ऑल्टरनेटली द सेंटर्स आर ए एंड बी. तो सबसे पहले जो सेमी सर्कल हमें टीनी टाइनी ब्राउन कलर का सेमी सर्कल दिख रहा है, वहां पे सेंटर ए है. फिर ये जो ग्रीन कलर का सेमी सर्कल दिख रहा है, वहां सेंटर बी है. ओके, फिर पर्पल सेमी सर्कल जो दिख रहा है, फिर से सेंटर ए है. ओके, सो ऐसे हमारे सेंटर्स ऑल्टरनेटली ए एंड बी सेंटर्स भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं. Starting from center A of the radii 0.5. Okay, then the another one radii 1, another one radii 1.5, another one radii 2, as shown in the figure. What is the total length of such a spiral? Made up of 13 consecutive semicircles. Now we need to focus on this semicircles. ओके, हमारे पास एक स्पाइरल है जो बहुत सारे सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है. यहाँ जो सबसे पहला सेमी सर्कल दिख रहा है, उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है. ये जो सब ब्राउन कलर्ड सेमी सर्कल हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है. मेकिंग सेंस? यस अब्दुल्ला, इज इट मेकिंग सेंस? Yes. नाउ देन ग्रीन कलर सेमी सर्कल, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. पर्पल कलर सेमी सर्कल, दैट रेडियस इज 1.5. तो पहले सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है. दूसरे सेमी सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है. ओके, तीसरे सेमी सर्कल का रेडियस
1.5 सेंटीमीटर है। चौथे सेमी सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ओके 2 सेंटीमीटर। पांचवे सेमी सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ऐसा करते करते कितने सेमी सर्कल्स है? टोटल 13 सेमी सर्कल्स वी आर हैविंग। ओके 13 सेमी सर्कल्स वी आर हैविंग। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इन सारे जो सेमी सर्कल्स हैं इनका लेंथ फाइंड करना है। आई मीन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। इस पूरे स्पाइरल जिसमें 13 सेमी सर्कल्स हैं, इस स्पाइरल का लेंथ बताओ। तो स्पाइरल का लेंथ का मतलब है कि हमें, हमारे पास सर्कल है, ओके नॉट द कंप्लीट सर्कल, द सेमी सर्कल वी आर हैविंग, ऐसा कुछ। हमें इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस बताना है। सरकमफेरेंस दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ द स्पाइरल। अगर हमने पता लगा लिया दैट ब्राउन कलर, ये जो आर्क दिख रहा है इसका लेंथ कितना है, देन द ग्रीन आर्क इसका लेंथ कितना है, देन द पर्पल आर्क इसका लेंथ कितना है, देन द रेड कलर आर्क इसका लेंथ कितना है। अगर हमने सारे आर्क के लेंथ को ऐड कर दिया तब हमें पता लगेगा इस स्पाइरल का लेंथ कितना है। हाँ या ना? Yes. और सर्कल में आर्क लेंथ का मतलब होता है सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, दोनों एक ही बात है। सर्कल में आर्क का लेंथ होता है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो जस्ट बिकॉज हमें रेडियसेस दिया हुआ है, पहला रेडियस 0.5, दूसरा रेडियस 1, तीसरा रेडियस 1.5, चौथा रेडियस 2, पांचवा रेडियस 2.5, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेडियस को उठा के और ऐड कर देंगे। रेडियस को ऐड करने से, और एपी, रेडियस इज स्टिल इन एपी, बट इन रेडियसेस के एपी को अगर हम 13 टर्म के समेशन को निकाल दें तो वो हमें पूरे स्पाइरल का लेंथ नहीं देगा, राइट? Yes. ओके हमें सरकमफेरेंस निकालना होगा। इस रेडियस की हेल्प से हमें सरकमफेरेंस का एपी क्रिएट करना होगा। फिर हम उस एपी के सम ऑफ 13 टर्म्स को ऐड करेंगे, जहां पहला सरकमफेरेंस, दूसरा सरकमफेरेंस, तीसरा सरकमफेरेंस, चौथा सरकमफेरेंस, पांचवा सरकमफेरेंस, इन सारे सरकमफेरेंस को हम ऐड करेंगे। तब जाके हमें इस पूरे स्पाइरल का लेंथ पता लगेगा। अब तक हमें क्या क्या क्लैरिटी है? रेडियस पता है एक एक सेमी सर्कल का। ओके एक एक सेमी सर्कल का अगर हमें रेडियस पता है तो हम सरकमफेरेंस, एक एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। और हमें क्या पता है कि टोटल कितने सेमी सर्कल्स है? 13। तो जो भी हमारा एपी क्रिएट होने वाला है वहां पे टोटल 13 टर्म्स होंगे। सबसे पहले हम इस ब्राउन कलर वाले सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अब्दुल्ला? circumference of a circle formula is? Yes, ma'am. Can you repeat? What is the formula for circumference of circle? 2 pi r. ये सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, अगर हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो 2 pi r/2 दैट इज पाई आर, यस और नो? Yes. ओके तो ब्राउन वाले, ये जो सेमी सर्कल ब्राउन कलर का है हमारे पास, इसका सरकमफेरेंस हम निकालेंगे पाई आर। ओके आर हमें पता है 0.5, तो 0.5 पाई हम पाई के टर्म्स में ही रखते हैं अभी के लिए। फिर ये जो ग्रीन कलर वाला सेमी सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो पाई आर। यहाँ पे आर क्या है? 1, सो 1 × पाई। आ रहा है समझ में? Yes. ओके ऐसे ही पर्पल वाले सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, ऐसे ही रेड वाले सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस अगर हम ऐसे निकालते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.5 पाई। ओके नेक्स्ट 1 पाई, नेक्स्ट 1.5 पाई, नेक्स्ट 2 पाई, नेक्स्ट 2.5 पाई, नेक्स्ट 3 पाई। ओके ऐसा करते करते हमें सरकमफेरेंस का एक सीक्वेंस मिल जाएगा विच इज स्टिल इन एपी। कैन यू सी दैट? Yes. ओके इन सारे सरकमफेरेंस को हम ऐड करेंगे। सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी हमें निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ओके दैट इज n/2, 2a,
pi. Okay, we need to take pi. Plus n minus 1, 13 minus 1 is 12 into d. Common difference is 1 pi minus 0.5 pi is 0.5 pi. Making sense? तो क्या हम हमारा आंसर Yes. पाई के टर्म में लीव करेंगे? हाँ, हम हमारा आंसर पाई के टर्म्स में ही लीव कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और यहाँ Yes. पे लिखा हुआ है टेक पाई एज अ 22/7. तो हमें सारे कैलकुलेशन करने के बाद पाई की वैल्यू 22/7 सब्सटीट्यूट करनी होगी. अगर क्वेश्चन में लिख के बताया गया है तो दैट टेक पाई एज अ 3.14 और टेक पाई एज अ 22/7. सो अकॉर्डिंगली वी विल टेक इट. प्लीज फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी. I can't find it, ma'am. You can't find the value. Yes. 0.5 into 2 will be 1 pi, right? Plus 12 into 0.5, 12 into 0.5, 60. That means 6, right? 6 pi. Yes or no? Yeah. Right? Yes. 13/2, 6 pi plus pi will be 7 pi. अब हमसे बोला जा रहा है पाई को 22/7 ले लो. तो हमने पाई को 22/7 सब्सटीट्यूट कर लेना है. 7 7 gone. 2 1 times 13 into 11, 143. Making sense? This is the length of the spiral. Are you getting, Abdullah? Yes, ma'am. Okay, we have completed this chapter. हमने एक एक क्वेश्चन बहुत केयरफुली डिस्कस कर लिए. यहाँ पे क्वेश्चन 17 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. So yeah, we are done. Is it clear? Yes, ma'am. What will be the next chapter which you want me to start? What do you think is the best, ma'am, to start? Is like after that, after this one I can start with triangle, because anyway we have to do each and every chapter. So I'll start systematic. I'll take the chapter systematically. Okay, the first, second, third, fourth done, fifth done, sixth I can take after that. Okay, if you don't have any urgency that in your school this chapter going on, or maybe I must take this one, so yeah, I'll be taking the next chapter. Because if you will learn systematically, if you don't have any urgency, then systematically will be the best approach. Why? Because NCRT, the questions and the chapters are also designed in that manner that you have learned solving linear equations in two variable, and here you are using it. If initially I'm starting the session and I am telling you let's start with arithmetic progression, and now you will find in each and every like question we are having a linear equation, pair of linear equation which we have to solve for finding a value and b value.
and you have not even done pair of linear equation chapter, how you will understand? So you can see each and every chapters are just related with each other, the concepts are related with each other. Accordingly, the roadmap, the syllabus, the index you are having. Okay, so yeah. Inan, you want me to start circles? Yes, Inan. Can you hear me? Yes, ma'am. You want me to start circles? Okay, ma'am. Okay. So let me give you a quick the review of what we have discussed, because I don't think Abdullah will join. And you will be here or you will also leave now? I'll be here, Yes. ma'am. Okay, so let me share another screen and let me give you the briefing of circle which we have covered in 2 classes. Okay, I'm taking as much as possible. Okay, let me show it over here. Okay, this is not our OneNote. I'm showing over here itself. So we are having the first concept is, if you are having a circle, if you are having a circle, just a moment, no. Or can you see this screen? Okay, you can't. Can you see this screen, Inan? Yes, ma'am. Okay, I'm not starting circle here. I'll see which chapter I can start. But since you have missed one class, let me show you. So if we are having a circle and if we are having a line like this, which is not touching the circle at all, this type of line is called the non-intersecting line. It is not intersecting our circle, hence the name non-intersecting line. If a circle and a line is like this, the line is called as non-intersecting line. If a circle and a line is like this, I'm not trying to say it is passing through the center or what, just a random line I have drawn, or maybe just a moment. If the line is like this, so these are the lines which is intersecting line, it is touching, it is cutting the circle, and this type of line here in this chapter is having a special name. This type of line which is cutting our circle at two distinct point is called secant of a circle. Okay, secant. Secant means such a line which is cutting the circle like this. Okay, previously in class 9 you have learned the concept of chord of a circle, and here I am saying that chord was a line segment, and if you will stretch it from both direction and you will give it a shape of line, a straight line, which can be extended till infinity in the upward direction and till infinity in the another direction, that line is called as secant. So whenever anybody anywhere it will be written as a secant, you need to understand secant means a circle and a line, and the line is intersecting the circle at two distinct point. Is it making sense? Yes, ma'am. So a Okay, secant can stretch to infinity. yeah, a secant can be stretched till infinity because it's a line. Okay, a straight line. Now now the next case is, if we are having a circle and if a line is just slightly touching the circle like this, okay, this type of line is called as tangent, which is touching the circle at one and only one point. So three cases: line is not intersecting, then the line is called as non-intersecting line. Next,
line is intersecting the circle, then we have to check, is it intersecting at two distinct points? That's called secant. Third, if the line is touching the circle, intersecting the circle at one and only one point, that's called the tangent to the circle. Is this three cases clear? Yes, yes, ma'am. Okay. Now, if we are talking about a circle, okay, on a circle there are infinitely many points. Infinite points are there. So if the question is asking how many tangents you can draw on a circle, since a circle contain infinitely many points, hence infinitely many tangent can be drawn. Now, if I will ask you how many tangent can be drawn at a point P, then one and only one tangent can be drawn at a point P. Making sense? Yes, ma'am. Okay. Next concept is, if we will take a circle, okay, and in that circle, if I will draw a secant like this, okay, through uh, this secant we are having over here, and I want to draw lines which are parallel to this secant. So I can draw a line like this, okay, parallel to this secant. Even if it doesn't looks like parallel, just let me draw which at least look like parallel. So I can draw a line which is parallel to the secant, orange one. I can draw another line which is parallel to the secant, orange one. I can draw another line which is parallel to the secant, orange one. I can draw a line which is parallel to the secant, orange one. Similarly, I can draw so many lines over there on the other side parallel to the secant, okay, here, or maybe here, okay, or maybe like this, okay, even if it doesn't look so, let me draw. So there is another concept over here, that at a time, either the question will be like this, that at a time, how many parallel tangent can be drawn? If we are having a secant, okay, parallel to that particular secant, how many tangent can exist? So you can see that so many parallel line we have drawn, but only two lines are such which is tangent also. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so for this secant, two tangents at a time. Or even if the secant word is not mentioned and it says how many parallel tangent can exist, just the question will be like this: how many parallel tangent is possible? So this question signifies that how many parallel tangent at a time is possible. At a time, that means two parallel tangent at most is possible, that two lines tangent also, parallel with each other also. Making sense? Yes, ma'am. Okay, so at a time two tangents are possible in a circle. Now the next was that particular theorem. I'll be taking that theorem in the next class. That theorem, which uh, tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. That theorem, and along with some class 9 just theorems and all, just the review of that, I'll be taking it in the next class over here. Okay. Okay, ma'am. So two tangents can exist parallelly at a time in a circle, right? Yeah, at a time. Ma'am, another question, like this tangent and secant comes in trigonometry also, right? So how does it apply in triangles? No, this tangent and secant doesn't come in trigonometry. They are just take tan theta as a tan theta, tangent of the theta, and sec theta as a secant of the theta, but don't try linking this circle with over there. Okay, if the name is matching, we will try not connecting both the concept. There is no correlation, at least for now. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So yes,